आप सभी को। जैसे आप जानते हैं, टुडे 30th March 2024 इज़ द डेट फॉर लास्ट डेट फॉर विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर। एंड जैसे आप जानते हैं कि 16th Yachuli में देर वर 4 contestants who were validly nominated candidates after scrutiny that was held on 28th। तो उसके बाद 4 कैंडिडेट्स थे, चारों का नॉमिनेशंस एक्सेप्ट हुआ था आफ्टर स्क्रूटिनी ऑन 28th। मिस्टर ताबा तेदेर फ्रॉम बीजेपी, मिस्टर तोको तातुंग फ्रॉम एनसीपी अजित पवार, and Mr. Toko Chada and Mr. Toko Takam of these both were independent candidates। तो आज विड्रॉवल के लिए लास्ट डेट था बिफोर 3 PM। So two independent candidates from 16 Yachuli who are validly nominated, Mr. Toko Takam and Mr. Toko Chada, both have withdrawn their nominations। तो दो लोग अपने नॉमिनेशंस विड्रॉ कर चुके हैं। इसके रिजल्ट में अब वी हैव टू कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स, मिस्टर ताबा तेदेर फ्रॉम बीजेपी एंड मिस्टर तोको तातुंग फ्रॉम एनसीपी अजित पवार। So relevant forms have been published। Form 7A जो validly list of contesting candidates होता है, so that has been published, which are as per the guidelines and norms of the election commission। ये था 16 याचुली का। 17 हापोली में जैसे आप जानते हैं कि there were also 4 candidates who had filed their nominations, out of which during scrutiny 3 candidates' nominations were rejected, and only because of which only one candidate remained, and hence 16 Hapoli Assembly constituency became uncontested। So आज after the time of 3 PM, last the day for withdrawal of candidature, 3 PM के बाद, since it was an uncontested election, the certificate of election has been handed over to the candidate who is elected unopposed or uncontested। So 3 candidates names were Mr. Hage Appa was the candidate from BJP, Mr. Hage Nama, Mr. Hage Kobing, and Mr. Tapi Mali। Mr. Hage Nama and Mr. Hage Kobing were independent candidates, and Mr. Tape Mali was a candidate from PPA, People's Party of Arunachal। So on the grounds of issues in the nomination papers, the candidature of three candidates, Mr. Hage Nama, Mr. Hage Kobing, and Mr. Tape Mali, were rejected during scrutiny। So these are the updates from our side। सर वो 3 कैंडिडेट जो था जैसे उसका रिजेक्शन किस बेस पे था? मिस्टर तापे माली पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल के कैंडिडेट थे। उनका जैसे कि आप लोग उस दिन भी सवाल पूछे थे, जो हमने बोला था कि स्क्रूटिनी के टाइम पे टेकअप होगा, तो उनका कैंडिडेचर द विड्रॉवल जो हुआ था, दैट वाज नॉट द रीज़न। विड्रॉवल के लिए हमारे पास जो लेटर आया था विद द रिटर्निंग ऑफिसर, दैट हैड कम, द करस्पॉन्डेंस हैड कम इन द फॉर्म ऑफ अ लेटर। एनी पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी कोई भी कैंडिडेट को स्पॉन्सर करता है तो फॉर्म ए एंड फॉर्म बी होता है। फॉर्म ए में हु इज़ द ऑथराइज्ड पर्सन हु कैन नॉमिनेट और propose the candidate of the party, that person's name would be mentioned। and in form B, who is the candidate on behalf of the party, इनका नाम रहता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आए थे फॉर्म ए और फॉर्म बी वर बोथ signed by Mr. Kafa Bengia, the president of PPA, whereas the correspondence that we had received on the last date of nomination was from Mr. Kaling Jarang, who was the working president। So there were 2 issues here। One is the one who has proposed in form A and form B, he only that person is authorized to take it back। That is number 1। Number 2, you have to take back in form B only and not by way of any correspondence or any letter। So Mr. Tape Mali's candidature was not rejected because the party withdrew its support। It was rejected on the technical grounds that there were many columns in the nomination papers
that were omitted. They were not there in the format only which was submitted by the candidate. A few of them were blank, many of them were omitted. So these were the grounds. I mean, these, if any column is left blank or omitted in the affidavit, that becomes a ground for rejection. So the rejection of the candidature of Mr. Tape Mali was on that grounds, and not because the party had withdrawn the candidate support for the candidate, because that was not in the proper format that it was supposed to be. And as regards the candidature, rejection of candidature of the other two independent candidates, it was also on the same grounds, that the affidavit was incomplete, in the sense many of the fields were left blank, which the RO during the filing of nominations had brought it to the notice of the candidates, and they indeed had filed fresh affidavits. But then the fresh affidavits were also, the fields were blank. This was brought to the notice of the candidates during scrutiny, but they said yes, they admitted to the fact that yes, some of the columns were blank, because that was the reason because of which the candidature of the other two independent candidates also was not considered, or nominations were rejected. सर 16 एक्चुअली का जो दो कैंडिडेट थे उनका भी इंडिपेंडेंट से जो खेलने के लिए सोच रहे थे उनका क्यों रिजेक्शन किया गया सर? उनका रिजेक्शन नहीं किया, That was not rejection. उन्होंने आज विड्रॉ किया उनका। सी एक्चुअली में 4 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन फाइल किए थे, चारों का नॉमिनेशन एक्सेप्ट हुआ था, 2 लोगों ने आज विड्रॉ किया है। और सर जैसे कि उस दिन एक्चुअली के जो दो कैंडिडेट थे ताबा तेदे और ये तोको तातो दोनों का एक ही समय पे था स्क्रूटिनी, पर दोनों निकालने टाइम अलग अलग से क्यों निकला? पहले तोको तातुन की ने निकला, फिर उसके बाद ताबा तेदे ने ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद निकला, ऐसा क्यों? अच्छा देखिए, ये ऐसा होता है कि स्क्रूटिनी प्रोसीडिंग्स जो 11 बजे से था, स्क्रूटनी प्रोसीडिंग्स हम सीरियल नंबर ऑफ नॉमिनेशंस के बेसिस पे लेते हैं। हमारे सीरियल नंबर ऑफ नॉमिनेशंस ऐसे थे कि जैसे मैंने उस दिन बताया था कि कैंडिडेट्स हैड टेकन अप 2 नॉमिनेशंस फर्स्ट डे, एक दिन मिस्टर ताबा तेदर ने 2 नॉमिनेशंस फाइलिंग किए थे, and NCP के candidate Toko Tatung, Mr. Tokona Tatung also had filed 2 nominations in that day. And next day again, on the last day again, two sets of nominations were filed. So we take up the nomination serial number wise. तो serial number wise में लिया तो and because candidates, एक candidate का चारों nominations एक साथ लेके we take up the scrutiny proceedings. We ask for objections, if any, to be raised by the other candidates or their advocates or anyone. So there were this scrutiny was, the nomination paper was thoroughly scrutinized, and also it was given for, the other candidates also requested that they would want to look at each other's nomination papers. तो ये सब procedures होता रहा, and because of it the scrutiny proceedings went on for 3 to 4 hours. Now after that, see, scrutiny में ये भी लिखा गया proceedings में कि the candidate may or may not be present for the scrutiny proceedings. It is the candidate's wish to be present. If the candidate wants to be present for the scrutiny, he can be present along with 3 other persons. That is, that is the permissible limit. So maybe I think when all the scrutiny was getting over, Mr. Toko Tatung got up and he sought permission that he would want to leave. So that's completely his call why he had to leave early and why Mr. Taba Dedir left a little late. But maybe he had to leave somewhere early. That is why, because of this requirement, that the candidates are also aware that आप चाहे तो नहीं भी रह सकते scrutiny proceedings में. So maybe after each respective scrutinies were done. So during that process, I think one of the candidate took permission and he left. सर ये वोटिंग डे से पहले जो कैंडिडेट है उनका कुछ और लीगल प्रोसेस है कि और कुछ करना होता है उनको? आज विड्रॉ का डेट था ना, तो वोटिंग अभी जो विड्रॉ डेट है उसको वोटिंग का बीच में कुछ लीगल कुछ उनका कुछ करना पड़ता है? अभी तो उनका लीगल एसेट नहीं, दे आर नाउ द कैंडिडेट्स नाउ, दे आर नाउ द वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स. अभी तो उनका इसके आफ्टर दिस देयर इज नथिंग फॉर देम टू बी डन. नाउ इट इज़ ओनली फॉर इट्स अप टू द ऑन द डे ऑफ वोटिंग ओनली. नाउ वी हैव टू मेक सर्टन प्रिपरेशन. हम लोगों को प्रिपरेशंस करने होंगे, हम लोग फ्रीक्वेंटली पोलिंग स्टेशंस विजिट करेंगे. इसके बाद अभी वल्नरेबिलिटी मैपिंग का भी हमें करना पड़ेगा, मी एंड एसपी टुगेदर.
एंड विल हैव टू, एंड हम एक मीटिंग भी करेंगे कल विद द पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर द कैंडिडेट्स, ऑब्जर्वर एंड एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर विल हैव अ मीटिंग विद दैम. सो ये रहेगा, एंड दे विल बी प्रेजेंट फॉर वेन एवर वी डू दी रैंडमाइजेशन. कल जैसे कि सेकेंड रैंडमाइजेशन होगा हमारा ईवीएम मशीन्स का, उसमें इट इज़ रिक्वायर्ड दैट द पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स बी प्रेजेंट फॉर दैट. उसके बाद हम ईवीएम मशीन्स का कमिश्निंग करते हैं, after ballot papers are prepared. So once the commissioning is done, during that time again they are required to be present. When we open the warehouse, the strong room, to commission the EVMs, उस टाइम पे candidates and parties have to do. So these are the requirements that they have to do. Apart from that, there is nothing as far as that. सर जैसे कि एमसीसी जो लागू किया गया था और अभी 17 जीरो हमारी कंस्टिट्यूंसी में जो अभी अनअपोज हो किया गया है, तो बहुत पब्लिक ऐसा कंफ्यूज भी है कि अभी तक एमसीसी लागू रहेगा या नहीं, तो आप उसके बारे में तो कुछ एमसीसी ज़रूर लागू रहेगा, और पब्लिक का मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन हापोली में भी तो है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का. वही कंफ्यूज है कि no, तो अनऑपोज्ड ओनली स्टेट असेंबली का है, स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का है. सो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए तो वोटिंग तो होना ही है. सो दिस इज़ अगेन अ रिक्वेस्ट, आप लोगों के माध्यम से मेरा रिक्वेस्ट है हापोली के लोगों को कि कोई मतलब इट इज़ आई हैव बीन टोल्ड दैट अगर अनऑपोज्ड होता है तो थोड़ा एंथुसियाज्म कम रहता है वोटिंग में. सो इट इज़ रिक्वेस्टेड, आई अर्ज ऑल द पीपल ऑफ हापोली, 17 हापोली कॉन्स्टिट्यूंसी, टू प्लीज़ कम फॉरवर्ड and vote for the parliamentary constituency elections also, and let us not let our area's voting percentage go down because of this. And MCC will be there. MCC will be taken out after only when the counting and results are declared and election commission issues a circular saying that MCC model code of conduct ceases to exist. So till then MCC will be there.